Uh, so good morning to all of you. I am Kumar Behera. On behalf of Odisha State Open University, I would like to welcome all of you to this virtual platform. Today, our resource person, Dr. Jayanta Parida, is going to deliver his lecture on decentralization. Uh, uh, we all are acquainted about this decentralization because in a democratic country like India, all are familiar in this topic. So today in this unit, we will discuss about basically 4 units that are Panchayati Raj institution, its composition, power and function of Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Jalla Parishad. Next unit is about organizational structure of urban and local bodies. And the last unit is about power and function of municipal corporation, municipal council, and notified area council. So, as we know, the process of distributing the decision making power to the smaller unit is known as decentralization. गोटे बड़ यूनिट को स्मॉलर यूनिट्स बा लोकल यूनिट को पावर हस्तांतर करिया को डिसेंट्रलाइजेशन कुआ जाय. Taking away the power from the supreme level and the state level and giving it to the local level is called decentralization, because in a local government is always an excellent means of providing political education and training to the people, without which they cannot become well functioning and active participant in the democratic process. So isn't everybody is a participant in the democratic process, and the success of democratic system largely depends upon the existence of a democratic decentralization of power. So decentralization of power must require in a democratic country. So with these few lines, I would like to request our resource person to please take the session and please continue. Over to you, sir. Please continue the session. Thank you, Bijay sir. Good morning to all of you. Good morning also our technical sir, Suna sir. Am I audible? Hello? Hello? Yes, sir, you are clearly audible, sir. Please continue. Yes, sir, you are clearly audible, sir. Please continue, sir. Okay. So today is our last class, BPS-02. We shall be taking this last block, that is block 4. And in this block 4, we shall be discussing, as Bijay sir already mentioned, it is the topic is decentralization. In Odia, it is called Bikendrikarana. And in this block, we have 4 units left. That is unit 12, that is on Panchayat Raj institutions. Then unit 13, power and functions of Panchayat Raj institutions. Unit 14, organization and structure of urban local bodies. Then unit 15, the last unit, the power and functions of the local bodies, urban local bodies. So आज हम चारोटी यूनिट विषय आलोचना करिबा. प्रथमे जेतु हमरो ए जो ब्लॉक रो थीम अछि त नाटा अछि विषय वस्तु अछि डिसेंट्रलाइजेशन तापर किछि आलोकपात करिबा. तापरे हम जिबा यूनिट वाइज आलोचना करिबा. So dear student and learner also, decentralization is a process by which the power has been dispersed, divided and transferred. In Odia, पिलाମାନେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଏକ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା. So decentralization is opposite type of condition is called unitary. So in the last class also we have discussed that 2 types of government. One is called federal government and another is called unitary government. So federal government, one is that where the power has been decentralized, and unitary government is that where power is centralized. So विकेंद्रीकरण अर्थ होची पिला माने जेउंठी की सरकारटा गोटिए केंद्र नुहे विभिन्न केंद्र रु पिला माने काम करि थाए एवं एठारे क्षमताटा गोटिए केंद्र रे ठुळ न होई क्षमताटा विभिन्न केंद्र रे याको हस्तांतर करा जाय थाए. Power has been transferred, power has been divided, power has been dispersed to different organs of the government. And in a unitary government, which is opposite of decentralization, where all the powers are centralized. एठारे क्षमतार केंद्रीकरण होता है एवं गोटे केंद्रु सारा देश पर शासन करा जाता है. उदाहरण स्वरूप आम भारत वर्ष जोटा आम आगु पढ़ी सारी जो क्षमतार
गोटे केन्द्र नुहे विभिन्न केन्द्र पिला माने एठी क्षमता सब बंटा जाइछि बा क्षमता को हस्तांतर कराइछि. On the other hand, small country like Israel, Japan, England, so there is only one government, and from there the power is controlled, and there is one government, one state, and one rule in those countries. So in a bigger country like India, where there is multiple diversity, there is a lot more complexities, lot more differentiation among the people. So there is bound to be decentralization of power. पिला माने हम जानि जे हम देश गोटे विशाल देश 132 कोटी देश जोठारे कि विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न अंचल लोक वास करंती. तो इंडिया इज ए ट्रूली diversified country. So it is not possible to rule among the people from a unicenter or one center, that is from Delhi, because we have lot of variations. That's why we have created 28 states and 9 union territories. So that shows that power has been decentralized, power has been transferred. And in brief, we may say, to make our democracy, Indian democracy, very vibrant, a powerful, and truly people oriented, the policymaker of our country, they have dispersed power, transferred power, and divided power through the principle called decentralization. पिलामाने ए विकेंद्रीकरण नीति को अवलंबन करी भारत वर्ष रे गणतंत्र शासन को अधिक मजबूत करिया पई, अधिक लोकाभिमुखी करिया पई आम शासन क्षमता को पिलामाने विभाजन करा हैछि एवं एटा विभिन्न स्तर रे बंटन करा हैछि. And broadly we have 3 divisions. I mean, we have 3 types of decentralization of power. One is called at the national level, second tier is called our state level, and third tier is called our local level. So we have government at local government, which is called local self government, जो हम ओडिया कहूजे स्थानीय प्रशासन बा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था. मझिर रहिला हमरो राज्य सरकार माने स्टेट गवर्नमेंट, and सभा ऊपर रहिला केंद्र सरकार, that is called union government or our national government. And our constitution has taken enough care to divide and decentralize power among the 3 units. वर्तमान हमर शासन पिला माने 3टी केंद्र हेजी एवं 3टी केंद्र को क्षमता हमर बंटा करा हेजी. गोटे हला हमर हम आगुर पढितले फेडरलिज्म रे, गोटे होजी हमर केंद्रीय तालिका बा यूनियन लिस्ट, second is state list, and now after 73rd amendment जोटा हम आज आलोचना करिबा, वर्तमान लोकल गवर्नमेंट मानको 29 आइटम्स 29 आइटम दिया हेजी जा पर से माने आईन तयारी करिवे, ता पर से माने शासन करि परिबे. So briefly आज से ऊपर आलोचना करिबा. So the purpose of decentralization of power is to strengthen the roots of Indian democracy. प्रंतर मुख्य उद्देश्य कोन ना, उद्देश्य होची भारतीय गणतंत्र को तळ स्तर को नबा, ग्रास रूट लेवल को नबा, तृणमूल स्तर को नबा, जोट लोक माने प्रत्यक्ष भाव सेठी शासन रे शामिल हे परिबे, so that our democratic governance will be strengthened, its root will be strengthened. There will be more opportunity for the people to participate in the local self bodies. Besides that, it will provide political education to the people, and also it will build it will provide some sort of training to the local leaders. स्थानीय नेतृत्व सृष्टि करि परिबा, लोक माने एठी बहुत संख्या रे शामिल हे परिबे, घरे बसि पारि घरे रहि करी एते सरकार शामिल हे परिबे. तण गोटे अंशीदारी सरकार, ओडिया इंग्लिश रे कहूजे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, एटा पिला माने सृष्टि हे परिबो जदि आमे क्षमताटा को तळ स्तर को पठेइबा. तण पिला माने एई कथा को आखि आगर रखी भारत बळी एक डाइवर्सिफाइड कंट्री and very vast country, very complex country, to strengthen our democracy, to strengthen its root and make the democracy more participatory, more people oriented. So that is adoption of the principle called decentralization of power. तो पिला माने एति पई हमरो क्षमता को गोटे केंद्र न रखी आमे 3टी केंद्र करजे एवं क्षमतार विकेंद्रीकरण करजे एवं 3टी स्तर रे, केंद्रीय स्तर रे, राज्य स्तर रे एवं स्थानीय स्तर रे आमे सरकार मान तैयारी करिचे एवं स्वतंत्र भाव रे आम संविधान ए 3टी स्तर को क्षमता बंटन करछि एवं से माने निज स्तर रे स्वाधीन होई
ऑटोनोमस भावरे निजर शासन कार्य संपादन करिवे। सो एई परिप्रेक्षी रे हमर आज रहिबा आलोचना। सो लेट अस फर्स्ट मूव टू आवर यूनिट 12. Unit 12 is all about Panchayat Raj institutions. So dear students, in the context of decentralization, we shall be discussing about democratic decentralization, which in India called गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तामाने गणतंत्र को अधिक क्रियाशील करिया पई, अधिक मजबूत करिया पई आमे विकेंद्रीकरण नीति को अवलंबन करिछे एवं एटा को आपणे आमे वर्तमान स्थानीय स्तर रे सरकार मान स्थापना करिछे। Because as you know, our people lives in the local areas. Very few people lives in Delhi or Bhubaneswar. So it is not possible to be a part of governance there. So that's why our policymaker thought that if we transfer the power to the local level and create local bodies, then it will be very fruitful, it will be very effective, and people got the scope to be part of the governance. So पिला माने एमती कथा को आख्या कर रखी हमर भारत वर्ष रे दुईटी स्तर रे स्थानीय स्तर रे क्षमता हस्तांतर करा आइची। ए स्तर पिला माने कोड दुईटी ना गोटे हला ग्रामांचल आ गोटे हला शहरांचल। वन इज कॉल्ड रूरल लेवल एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड अर्बन लेवल। ए दुईटी स्तर रे हमर क्षमता बंटा जाई अछि एंड वी हैव क्रिएटेड two bodies, one for the rural people and another for the urban people. For the rural people, we have created a local cell body. Its name is Panchayat Raj institution. And for the urban, we have created urban local cell bodies. Okay, Swaranchal Staniya Swayata Shasana Sanstha ebang Gramanchal Staniya Swayata Shasana Sanstha. And Gramanchal Staniya Swayata Sanstha na hoji amaro Panchayat Raj. Okay, so in the unit 12, very briefly, since as you know, we have 30 minutes each, we have to cover each units. No, we have 4 units. So we have 4 units. Since we have 4 units and we have to cover by 11, so I propose that very briefly, but very briefly, but very keenly, I will be focusing on or highlighting the vital issues, vital points, which is very relevant from our examination point of view and from our academic point of view. जेता पिला माने मात्र समय कम 4 यूनिट का सारिवा एवं 4 यूनिट सारिया पे मु प्रपोज करूची जे सब मूल प्रसंग गुड का आलोचना करबा एवं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो प्रश्न आमे आशा करबा सेगुडा को पर निश्चित भाव रे ताको हाइलाइट करबा। ओके, फर्स्ट हम जिबा Panchayat Raj institutions. Okay, and its composition, यार ढांचा और तार गठन विषय रे हमें पढ़िबा यूनिट 12 रे। So dear student, Panchayat Raj in India having a very long history. It is one of the ancient institutions of governance in India. It is also one of the indigenous institutions of India. And from the ancient period till today, what has been happened in this local self-government, very briefly, very focusedly, we have to describe this unit. And also, as I pointed out, that this institution is one indigenous institution. तो ओडिया पिला मान होजी ए पंचायत राजटा होजी ग्रामांचल शासनर एक संस्था एवं एटा होजी आमर इंडिजिनियस आमर निजस्व। Dear student, as you know, we have borrowed the system of governance, parliamentary governance from the Britain. हमें ब्रिटेन उधार करिक आनिचे आमर असेंबली व्यवस्था आमर पंचायत व्यवस्था सॉरी आमर पार्लियामेंट व्यवस्था एवं आमर असेंबली व्यवस्था किंतु पिला माने पंचायत ना होची आमर निजस्व। तक हम कोठी बर करि आनि नांती भारत वर्ष रे एटा निजे तयारी हेची आपना चाहि एवं समय क्रमे पिला माने एटा विकसित हेची एवं समय क्रमे एटा आगु बढ़ी जी एवं वर्तमान आसी एटा ए स्तर रे पहुंची जोठी वर्तमान आमे ग्रामांचल रे तार शासन पई हमें पंचायत संस्था मान को देखुछु। ओके, सो डियर स्टूडेंट, पंचायत राज सिस्टम as a system of rural local government is a part of our culture and tradition.
पिला माने आम प्रथा परंपरा रो गाँ शासन बा गाँ पंचायत होची एक पुराना व्यवस्था को आदिम काल रु आमे ए शासनटा भारत वर्ष थिला अछि और आगु को रहिबो and in various texts in Ramayana, in Mahabharata, in Manusmriti and so many other texts we have the reference of village panchayat and since ancient period till today we have covered a long journey पिला माने पंचायत राज संस्था गुडी को याबते लंबा रास्ता पास कर सारिचंती एवं से माने स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था हिसाब रे ग्रामांचल रे काम करूथले जहा जोटा कि हम प्रथा परंपरा रा गोटे पार्ट थला एवं समय क्रम पिला माने एटा गोटे संविधान रो एक अंश विशेष रे परिणत हेछि आफ्टर पासिंग ऑफ 73rd अमेंडमेंट इन द ईयर 1992 ओके सो वेरी ब्रीफली हम तो आलोचना करिवा डियर स्टूडेंट द वर्ड कॉल्ड पंचायत the word panchayat has been come from the basic word called panch pila mane panch ro heji panchayat and as you know panch means 5 okay so pila mane aji jedi am gaan jhagada hoji ba sair jhagada hoji am kon korche na 5 jana lokun taki anuche 5 jana murubi taki anuche se jaha kohuchi am to manuche so that is the tradition so from there the institution called panchayat raj was got its origin pila mane seutu tar srushti heji ta mane आम झगड़ा को जो मेंटोले आम समस्या को जो मेंटोले आम जो 5 लोक डाकी आणुले पिला माने सेउटू सृष्टि हेची आधुनिक पुराना पंचायत व्यवस्था एवं वर्तमान से ना रखिछि आम पंचायत व्यवस्था सो द ओरिजिन इज लाइक दिस एंड दैट इज कॉल्ड पंच पंच मींस 5 एंड जो मुरबी काम डाकी आणंती ताको भावंती कोन ना से माने ईश्वर सो पंच परमेश्वर दे आर द एल्डरली पीपल or the people who are having some knowledge regarding administration, regarding arbitration of conflict, okay, and they are called for to settle our dispute at the local level. So स्थानीय स्तर सृष्टि होतबा विभिन्न विवाद को मेंटेया पई आमे जो 5 लोक डाकुथले ताको आमे कहउथले पंच परमेश्वर एवं से माने होजन ईश्वरंकर एक अवतार एवं पिला माने से माने कथा को मानुथले एवं सेउटु पिला माने सृष्टि हेची पंचायत व्यवस्था and in Maurya period, in Gupta period, so we have this type of governance which is sui generis. Sui generis means इतर आपणा छाई सृष्टि आ केही आमे बर करि नाहंती ना आनिचन जापान नु ना चाइना रू ना आमे आनिचन देबो इंग्लैंड ना अमेरिका इतर आपणा छाई सृष्टि हेजी भारत वर्ष रे एटा समय क्रमे अधिक रु अधिक मजबूत हेजी so in the ancient period this type of governance was found in Gupta in Maurya period and also the subsequent ages but with the passing of time these institutions got weakened पिला माने समय क्रमे ए संस्था गुडे किछ मात्रा दुर्बल होई पड़िले केतल दुर्बल हेले जेतेबेले मीडियम पीरियड रे हमर मुस्लिम रूल आरंभ सुल्तानेट पीरियड देन मुगल पीरियड पिला माने जेहेतु से माने बाहर देश लोक मान थिले they failed to understand the relevance of panchayat bodies for the local governance and they adopted their own pattern से माने सब निज कथा आरंभ कर देले कटवाल व्यवस्था आरंभ करले देन कचेरी आरंभ करले ओके जिला आरंभ करले जोटा कि आम इंडिया व्यवस्था सब नथिला सो समय क्रमे ये संस्था गुडा को दुर्बल होई पड़ला एंड लेटर ऑन वी कम अंडर द ब्रिटिश रूल पिला माने ब्रिटिश रूल समय मध्ये माने दुर्बल होई रहिले ब्रिटिश टुक वेरी लिटिल इंटरेस्ट टू रिवाइव दोज बॉडीज ए माने एमति सुप्त अवस्था रे बहुत दिन धरि रहिले and this panchayat could not effectively perform its function which it was functioning in the ancient period anyway dear student during the British period it was thought that by the Britishers unless until we revive these local bodies I mean panchayat institutions the governors of India will not be fruitful se man bhabile British bola jodi ame panchayat संस्था मान को इफेक्टिवली रिवाइव न करिबा ताले एते बड़ विशाल देश को आम उपयुक्त भाव में शासन करि परिबा नाही दैट्स व्हाई से माने विभिन्न पिला माने कथा गुडी को आरंभ कले एवं से माने विभिन्न पदक्षेप नेले भारत वर्ष रे ग्राम पंचायत व्यवस्था को पुनर्जीवित करिया एंड द फर्स्ट मेजर डिसीजन दैट वाज टेकन बाय लॉर्ड मायो in 1870 thereafter लॉर्ड रिपन in the year 1882 ई दुई जण बड़लाट भारत वर्ष रे पंचायत को सुदृढ़ करिया पई किछि पदक्षेप नैथिले परवर्ती समय रे हमर आसिला रॉयल कमिशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1907 तापर आसिला मर्ले मिंटो मोंटेगु चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 देन साइमन कमिशन
then Government of India Act 1935. So pila mane through these acts, various British rulers, British governors, British functionaries, administrators, they tried, they are not best कहले पिलाने भूल जाइबो, they tried at least to revive the local bodies for the rural governance called panchayat institution. But during our freedom struggle, our national fighters, people like Mahatma Gandhi, who thought that India lives in villages, unless until the governance of India will be come from the below, the governance will not be a successful one. पिला माने गांधी जी जरा हमर फ्रीडम स्ट्रगल होतला हेतबे भाबिले भारत वर्ष होची को ग्रामीण देश, सो ग्रामीण देश हेतिबारु गाँर शासन गाँर उन्नति न होले आम देशर लोक मानकर उन्नति ही पारिबो नाही. That's why time and again he wrote several articles in his famous Horizon, okay, and Hind Swaraj. So he expressed his opinion in various meetings, and he very openly said that we have to revive the panchayat bodies unless we will not able to successfully govern the rural India. जो पर्यंत आमे पंचायत संस्था को पिला माने ताको रिवाइव करि पारु नाहंती से पर्यंत आमे सक्सेसफुली भारतर ग्रामांचल को शासन करि परिबा नाही. That was the period of national movement. Now we shall be come to the period after independence. Dear student, when the constitution was drafted by the Constituent Assembly, lot of debate and discussions were made. The panchayat को केमति कोन रखिबा, तम केमति पावर दबा. So after lot of debate, lot of controversy also arised. पिला माने आ भितर अनेक गुडी समस्या मन मध्ये आसिला. Some people thought that India is a caste ridden society. भारत वर्ष होची गोटे जाति धर्मर देश. एवं हमर उच्च जाति लोक माने सेठी डोमिनेट करिवे एवं नीच जाति लोक माने जो माने हमें कहूजे very unfortunately those are called untouchables. Now they are called scheduled tribe, scheduled caste. Those are backward, those are poor. पिला माने सेमानकर voice नाही, they are voiceless, they are marginalized people. पिला माने सेमानकर किछि अंश रहिबो नाही गां पंचायत रे. तेणु people like Ambedkar से अपोज कले एवं ultimately consensus पिला माने करागला. Article 40 रे हमर मेंशन हला जे chapter called DPSP, Directive Principle of State Policy, जो भितर कहगला the state shall take steps to organize village panchayat. हमर राष्ट्र को पावर दिया गला. राष्ट्र कोन करिवो ना ग्रामांचल रे पंचायत संस्था मानकु तयारी करिया पे चेष्टा करिवो. किंतु पिला माने बेसी किछि फलप्रद हैला नाही एवं किछ दिन परे देखा गला लोक माने very effectively participate करि परना. पावर रहिला दिल्ली रे, पावर रहिला भुवनेश्वर रे. सेतबेले पिला माने 3 टियर हेनथला, 2 टियर हमर हेतला. तो लोक माने भुवनेश्वर की आसीबो बलांगीर रु, की संबलपुर रु, की बालेश्वर रु. So it is not possible. Then पुन दिल्ली दौड़ीबा एटु हमर 1600 किलोमीटर. It is not possible to go there to address our grievances there. That's why in the year 1952 Nehru government thought that let us try something innovative to involve the local people in governance. पिला मन सेति पई हमर दुईटी स्कीम चालू कले. गोटे हला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गोटे हला नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेस. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रो ओडिया हला गोष्ठी उन्नयन कार्यक्रम. हम जो ब्लॉक सब देखुचे परबा हो हमर योर स्मॉल स्मॉल ब्लॉक ओडिसा जो 314 ब्लॉक पिला मन अछि पिला मन सेतबल सेटा सृष्टि हेतला. ओके, thereafter we started another program called जातीय संप्रसारण योजना. पिला माने ब्लॉक सृष्टि करा गला. आशा करा गला कम से कम लोक माने तो ब्लॉक को जिबे, सेठी जाय कि तंकर कथा सब जणैबे. बट पिला माने देखा गला किछ दिन परे जे ब्लॉक मध्ये लोक माने गलेनी. So it was a failure. Okay, so thereafter Nehru thought that let us think very seriously to transfer the power and decentralize the power. Then Nehru appointed a committee under the leadership of Dr. Balwant Rai Mehta in the year 1956-57, and that committee submitted a report, and that committee for the first time recommended that there should be 3 tier of government. से पिला माने 3 थाकिया जेमते मन टिफिन सब नउचे गोटे भात डाली तरकारी से बळे भाबर से 3 थाकिया पंचायत व्यवस्था पई हमको सुपारिश करथले बलवंत राय मेटा कमिटी. दैट वाज द फर्स्ट कमिटी ये कि सुपारिश करथला पंचायत राज को सुदृढ़ करिया पई. तळे रहिबो गाम पंचायत, मझि रहिबो पंचायत समिति
आ ऊपर रहइबो जिला परिषद and lot of recommendation पिला मन से मान कले and in the year सरकार से रिपोर्ट को मानिले and in the year 1959 it was in Rajasthan जोटी कि देशर प्रथम पंचायत संस्था तैयारी कराला एवं सरकार विधिवत भाव सारा देश में पंचायत व्यवस्था आरंभ कले आणि ओडिशा इट वाज इन द इयर 1961 जेतबेले कि हमरो जनवरी 26 रे पिला माने ओडिशा रे हमरो पंचायत व्यवस्था आरंभ बट पिला माने जेतु से संस्था मानको पावर केमती आसीबो तांकर फंड्स केमती आसीबो तांकर फाइनेंस केमती आसीबो सेगुडा को विशेष भाव रे पिला माने वर्णित हेइ नथिबारु से माने इफेक्टिव भाव रे काम करि परले नाही तापर भी नेहरू मरी गेले 1962 रे आफ्टर द चाइना अटैक तेणु ये संस्था गुडा पिला माने पुणी सुखी गले सुप्त हो गले देन इन द ईयर 1977 व्हेन द अशोक मेहता कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय अनदर गवर्नमेंट कॉल्ड जनता गवर्नमेंट पिला माने जानि छे जनता गवर्नमेंट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हिसाब रे आसिला पावर को 1977 ने एवं पंचायत संस्था मान को रिवाइव करिया पे से माने आ गोटे कमिटी बसेले आ गोटे मेहता आसिले से हेले अशोक मेहता एंड अशोक मेहता कमिटी 1978 रे तांका रिपोर्ट दे देले से कमेंट कले टू टियर गवर्नमेंट कहले ऊपर रहिबो जिला परिषद मझिर रहिबो मंडल पंचायत जो हम ब्लॉक कहूचे तो से कहितले मंडल पंचायत से पिला माने ग्राम पंचायत कथा कहि नथिले किंतु पिला माने हमरो अशोक मेहता कमिटी रिपोर्ट कार्यकारी हो सरकार भांगला दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड thereafter it is Rajiv Gandhi he also took lot of interest he appointed several committees GPK Rao committee PK Thungon committee and ultimately LM Singhvi committee and पिला माने राजीव गांधी मते तादर मरि गेले बट गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द LN सिंघवी कमिटी पिला माने पंचायत राज हिस्ट्री रे एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण कमिटी काहे गुरुत्वपूर्ण ना दिस कमिटी सिस्टमैटिकली रेकमेंडेड मेनी रिवोल्यूशनरी रेकमेंडेशंस पिला माने से पंचायत इतिहास रे अनेक गुडे ऐतिहासिक पदक्षेप विषय से सरकार को सुपारिश करथले त गोटे बड़ थिला जे पंचायत संस्था मानकु एबे संविधान रे अंतर्भुक्त करा जाऊ सो पंचायत बॉडीज मेड एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके सरकार तको मानिले राजीव गांधी सरकार भी काम करथले किंतु तापर से चली गेले बट अल्टीमेटली इट वाज द ईयर 1992 द देन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर नरसिम्हा राव who was the prime minister Narasimha Rao he took the leadership and he passed two historic bills one is called 73rd constitutional amendment bill and this 73rd constitutional amendment bill is one of the most relevant and most historic from the journey of our local self government called panchayat raj pela mane panchayat raj को 1992 रे 73rd संविधान संशोधन द्वारा संविधान रे अंतर्भुक्त करागला एवं एथिरे पंचायत मानकर क्षमता निर्धारण करागला पंचायत माने केमि सठिक भाबरे लोकल बॉडी हिसाब रे काम करिवे स्थानीय स्वायत्त शासन काम करिवे गोटे ऑटोनोमस बॉडी हिसाब काम करिवे लोकल डेमोक्रेसी हे परिवे तापे मध्य पिला माने व्यवस्था करागला ओके एंड अनदर amendment was 74th amendment 74th amendment is meant for the urban local bodies सहरांचल स्थानीय स्वायत्त पई पिला माने करागला सेटा हम टिके पर आलोचना करिवा सो वर्तमान हमें आलोचना करिवा वेरी ब्रीफली व्हाट इज द मेजर फीचर्स ऑफ 73rd constitutional amendment act पिला माने 73rd constitutional amendment act रो मुख्य मुख्य सब वैशिष्ट्य गुडी को कोन सब थिला फॉर द फर्स्ट टाइम it recommended that constitutions be made panchayat bodies be made as a part and parcel of constitution for that purpose से माने कोन कले ना 11 शेड्यूल को गोटे नुवा सूची को जोग कले जाना होची 11 शेड्यूल एंड आर्टिकल 243 रे से माने अनेक गुडे नुवा नुवा सब उपधारा सब आर्टिकल सब जोडिले एवं it was provided that there should be regular election 5-year term there should be reservation and for the effective financial position of the panchayat bodies state financial commission will be constituted and for their recommendation the finance will be transferred to the local bodies so पिला माने क्षमता तापरे कर्तृत्व एवं तापरे अर्थ ए तीनटा बड़ कथा पिला माने जे कोनोसी सरकार काम करिया पे वन इज कॉल्ड पावर सेकंड कॉल्ड अथॉरिटी एंड थर्ड कॉल्ड फाइनेंस
बोले माने तीनटार व्यवस्था कर दिया गला 1992 73rd Constitutional Amendment Act रे. And it also recommended for the first time 1/3 reservation for the women. Okay, and in Odisha we have also reserved 50% seats for the women in the local bodies at the rural or for the panchayat raj institutions. So पिला माने एई भली भाबरे हमरो संस्था मान तयारी करा गला एवं पिला माने एथिर व्यवस्था रहिला 7th amendment रे कोन ना यूनिफॉर्म पंचायत राज सिस्टम ऑल ओवर दी इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर. पिला माने से व्यवस्था रहिला जे सारा भारत वर्ष रे गोटिए यूनिफॉर्म पैटर्न एका भली ढांचा रे हमर तयारी हबो लोकल बॉडी माने पंचायत संस्था माने. And they recommended 3-tier government: gram panchayat at the village level, panchayat samiti at the middle level, and jilla parishad at the district level. Okay, and they recommended that there should be proper transfer of power, there should be availability of finance and availability of our authority. Okay, जेमति गां पंचायत एक स्वतंत्र भाव में स्वायत्त संस्था हिसाब रे निजकू ऑटोनमस बॉडी हिसाब रे काम करि परिबो, गां रो उन्नति करि परिबो. पिला माने सेति पई से माने अनेक गुडी व्यवस्था करेथिले इन द ईयर 1992. सो फ्रॉम 1992 till today the panchayats are regarded as constitutional body. Like our prime minister, like our president, our सरपंच इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी. पिला माने हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भली वर्तमान हमरो सरपंच बाबू माने मध्य संवैधानिक पदाधिकारी. सो तांकर क्षमता वर्तमान संविधान द्वारा निर्धारित एवं निर्णीत मध्य. ओके, सो नाउ let us discuss about the very pertinent question that appeared in my screen regarding the aims and objectives of panchayat raj system. पिला माने एटा काहे की करा हैतला number 1 to reduce the burden of Indian democracy. पिला माने गोटिए स्तर शासन कले शासन बहुत अत्यधिक भार बढ़ी जीवो, तो शासन ठीक भाव रे ही परिबो नाही. So for the effective governance, for better governance, for participatory governance, power must be transferred to the local level where the people reside. जो लोक माने बसवास करंती से गां रे सीट क्षमता पठे दबा एवं सरकार ऊपर बोझ कमी जीवो एवं लोक माने घरे थाई करी डोर स्टेप रे सरकार रे शामिल हे परिबे. सुतरां गणतंत्रटा हमर सुदृढ़ हबो. So it will be effective, it will be participatory, and ultimately the roots of our democracy will be strengthened. Number 2, it will provide political education to the people. लोक माने जो मान जानि नांती शासन कोन सरकार कोन पिला माने ता द्वारा से माने जानि परिबे. So they will get some sort of political education. As Lord Bryce has rightly said, the local democracy or the local self government is a school of democracy. पिला माने तामे सब छोट छोट थिले सब स्कूल जाउथले, छुटी हम स्कूल सिखुथले बेसिक कथा गुडा केमती बसिबा, केमती हम लिखिबा, केमती हम हैंडराइटिंग सुदृढ़ हबो. So the basic things. So according to Lord Bryce, the local self bodies are the school of democracy. तापर हमें हमरो असला असेंबली बा तापर असला पार्लियामेंट की हेजिबो यूनिवर्सिटी की हेजिबो कॉलेज, किंतु पिला माने local bodies, panchayat institutions, they are the schools that are regarded by Professor Lord Bryce as the school of democracy. सेउट पिला माने हमको ट्रेनिंग मिलिबो, हमको शिक्षा पे बुझिया को मिलिबो. Okay, the next is it will also, by the transfer of power, people's hand will be strengthened. पिला माने क्षमता तल स्तर को पठे दिया जीवो, लोक माने कोन करिवे शासन भागीदारी हे परिबे एवं पिला माने कोन हबो सेठी ना भागीदारी शासन आसीबो एवं पिला माने क्षमताटा सेठी का मोनोपोली रहइबोनी, क्षमताटा विकेंद्रीकरण हे जीवो एवं लोक माने एम्पावर हे जीवे. एम्पावर मींस जेडा हम कहजे सशस्त्रीकरण. So democratic decentralization in the form of panchayat raj also strengthens people's power, which is called people's empowerment. Okay, लोक माने सशस्त्र हे परिबे या द्वारा. Number next, it will foster or it will rapidly develop the local area. पिला माने आतरा कोन हे परिबो ना द्रुत भाव रे ग्रामांचल विकास हे परिबो.
the rural needs, local needs can be addressed effectively. कोड स्कूल दरकार, कोड पानी दरकार, कोड रास्ता दरकार, the local problems जहाँ जहाँ सब हमर अछि, that can be addressed very effectively. Number next, it will also a training ground for the local or rural leaders. पिला माने जो माने ग्रामांचल सृष्टि हेबे नेतृत्व, सरपंच माने, वार्ड मेंबर माने, so पिला माने सेमान सिखि परिबे गणतंत्र आमे कोन करिबा. You might be knowing that after being elected as the ward member, they are also got some training and सेमाने पिला माने परवर्ष समरे सेमाने पंचायत रो सरपंच हेई परिबे. ओके, जो माने सरपंच होउचंती सेमाने समिति रो चेयरमैन हेई पड़चंती, जो माने पिला माने समिति रो चेयरमैन होउचंती परवर्ष समरे सेमाने मध्य हमर एमएलए होउचंती, एमपी होउचंती. सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रेनिंग ग्राउंड. जेमति गोटे मा ता छुआटा को सिखाए पढाए, सो पिला माने से बोली भाबरे ए पंचायतटा हमर लीडरशिप ग्रो करिवो एवं लीडरशिप को पिला माने से नेतृत्व सृष्टि करी ताको आगु बढ़िया पई से सुजोग देई पारे. Okay, so this is the a brief history regarding the journey of panchayat systems in our country, and this is the local government is nothing but we can say it is the foundation stone of our democratic governance. पिला माने ये होची से मूलदुआ आम गणतांत्रिक शासन व्यवस्थार जेते आमको सुदृढ़ करिवा लोक मानकर सेते विकास हबो, लोक माने सेते सरकार शामिल हेबे, सरकार भागीदारी हबो, and more people if participate in a bigger way, then definitely the democratic root will be deeper, it will be more stronger, and it will be definitely helpful, and it will be definitely a fruitful governance. ये गोटे फलप्रद शासन पिला माने हमर हेई पारिबो. Okay, and ultimately the aims of Gandhi, जोटा गांधी जी लक्ष्य रखितले कोन ना ग्राम स्वराज. पिला माने so means निज, राज means शासन. So स्वराज means self rule. आमे जदी शासन गान बसी के हम निजर करि परिबा, विलेज ऑटोनॉमी हबो, विलेज रिपब्लिक हबो, विलेज डेमोक्रेसी हबो, ultimately maximum problem of our country will be addressed. Okay, so this is all about our the composition of Panchayat Raj institutions. Now we shall come to the next unit, and the next unit is all about that is organization of our power and functions of Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jilla Parishad. एबे हम देखिबा ये जो तीनोटी संस्था हमें तैयारी कले, 3 tier बॉडी तैयारी कले लोकल गवर्नेंस पई, रूरल पई. Okay, that is called Gram Panchayat at the village level. We have Panchayat Samiti at the middle level or block level, then Jilla Parishad at the district level. पिला माने एमान गठन केमते हबो एवं एमानकर कार्य कोन सब रहिबो से विषय रे वर्तमान आमे संक्षेप रे वर्णना आलोचना करिबा. Okay, so dear student, 73rd Constitutional Amendment Act has very vividly mentioned about the power, function and composition of 3-tier Panchayat Raj bodies. पिला माने 73rd Amendment Constitutional Amendment Act रे पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद एमान किभଳି गठित हेबे, सेमानकर कार्यकलाप कोन हबो ओ सेमाने किभଳି कार्य करिवे ता पई विधिवत भाव रे पिला माने संविधान रे व्यवस्था करा गला. ओके, एवं आमे वर्तमान संक्षेप रे से विषय रे आलोचना करिबा. Okay, let us first discuss about the grassroots body, the last grassroots body of our democracy. पिला माने आम गणतंत्र रो सबुठारु जे तळ स्तर संस्था से होची के ना स्थानीय संस्था रो एक अनुष्ठान ताना पिला माने कोन ना ग्राम पंचायत. Okay, so this gram panchayat is situated or works at the village level. पिला माने गां स्तर रे, ग्रामीण स्तर रे पिला माने जो संस्था अछि हमर स्थानीय शासन करिया पई ता ना होची ग्राम पंचायत. And ग्राम पंचायत is the most vital institution so far the working of Indian democracy is concerned. पिला माने जदी हम गां कथा गुडा को गां रे बसिकरी गां पंचायत माध्यम रे सॉल्व कर दबा ताले हमर मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हेला बोली हम जानिबा. कारण
से समस्या गुडा पुणी ब्लॉक को जीवो पुणी से समस्या गुडा डिस्ट्रिक्ट का आसीबो पुणी आसीबो से हमर स्टेट लेवल को पुणी आसीबो हमर पार्लियामेंट को पुणी जीवो प्राइम मिनिस्टर पाखो को सो इफ आर लोकल गवर्नेंस विल बी स्ट्रेंथेन्ड एवं लोकल लेवल हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दबा पिला माने पंचायत पावर दे दबा सरपंच को पावर दे दबा सेठी हम जदी पिला माने सब काम सारि दबा ताले आउ गणतंत्र विशेष किछि असुविधा हबो नाही एवं दैट वाज द पर्पस पिला माने सेति पई हमरो करा हिजी गां पंचायत लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स कंपोजिशन पिला माने गठन जानिछो एवं this unit or this block is a very easy one पिला माने डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉक टा हम पई बहुत गुडे भारी सहज कथा एवं एथि अनेक गुडे परीक्षा रे क्वेश्चन मध्ये आसे ओके सहज तो सहज किंतु हम पई मध्ये अनेक गुडे क्वेश्चन आसे बिकॉज local governance assumes a lot of debate and discussion and importance in recent times पिला माने जेहेतु स्थानीय प्रशासन शासन ऊपर वर्तमान समय रे बहुत गुरुत्व दिया जाउछि एवं सेति पई ए संस्था गुडा का ऊपर पिला माने बहुत चर्चा आलोचना होउछि ओके ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ ग्राम शासन तो गां शासन पिला माने अछि ता काम करि थाय किए ना ग्राम पंचायत एंड ग्राम पंचायत इज कंसिस्ट ऑफ आवर सरपंच vice sarpanch and ward members and the ward members are called punch okay आमे जो पंच परमेश्वर पिला माने कहउतले ग्राम पंचायत कथा कहउतले से पंच माने होउचंदी वार्ड मेंबर माने होउचंदी तार सभा तळ स्तर अधिकारी शासन रो सभा स्थल रो कर्मकर्ता बा निर्वाचित हमर सदस्य मान and in Odisha the gram panchayat the composition varies and each gram panchayat is divided into number of wards. The ward numbers varies from 11 to 25 and from each ward a person is elected called your ward member and also the sarpanch is also elected directly from the people from the gram panchayat area and for setting up a gram panchayat in Odisha we have 2000 to 6000 people population pila mane jo gaଁ ro ba jo gaଁ manankar लोक संख्या 2000 रु 6000 भीतर हेतिबो सेठार गोटे आमे ग्राम पंचायत संस्था गठन करि परिबा जदि गोटे गां अछि हम करि परिबा जदि गोटे गां पॉपुलेशन एते नाही ताला आमे निबरिंग गां मान को नै त करि परिबा एंड इन ओडिसा प्रेजेंटली वी हैव 6234 ग्राम पंचायत आर अवेलेबल ओके एंड द ग्राम शासन पिला मन जो गां रा शासन होय पिला माने ता पई हमर दुईटी लेजिस्लेटिव बॉडी अछि कोन ता ना वन इज कॉल्ड पल्ली सभा that is called ward council or hamlet council and second called gram sabha okay पिला माने पल्ली सभा कोन हम जानि जे हमरो गोटे वर्ष साई थांती ओके सो से साई जे हम इंग्लिश रे कहते hamlet ओडिया कहते पड़ा से पड़ा को नै जो गामटा को बांटी दिया जते बिन पड़ा रे जोटी गोटे वार्ड मेंबर बछाई के आसंती ओके ता वार्ड काउंसिल मध्ये कहती पिला माने सो पल्ली सभा इज ए वार्ड काउंसिल जो जोटा कि विशेष करी से जो छोटिया मोटिया पड़ार लोक मानकर मीटिंग से पड़ा लोक मानकर कोन असुविधा अछि कोठी ड्रिंकिंग वाटर कोठी तमरो रोड कोठी इलेक्ट्रिसिटी कोठी स्कूल प्रॉब्लम रहउजी सो लोकल कथा गुडा को पिला माने एड्रेस करिया पई हमर पिला माने पल्ली सभा अछि एवं पल्ली सभा रे सेही लोक माने बसिबे जो लोक माने से निर्दिष्ट वार्ड रो बासिंदा हेतिबे दो जो आर द इलेक्टेड वोटर्स जो मान सब जार ना सब थिबो वोटर लिस्ट से मान सब बसिबे एवं पिला माने से माने बसिकरी तांकर गोटे मीटिंग करिकरी वर्ष को थरे पिला मीटिंग तांकर हबो एवं से माने पठेबे कोठी की ना टू द ग्राम सभा फॉर अप्रूवल एंड एज यू नो पिला माने ग्राम सभा मीटिंग हमर वर्ष को दुई थर बसथाय थरे फेब्रुआरी रे थर जून रे एंड ग्राम सभा मीटिंग is called by the head of the panchayat ग्राम पंचायत is called सरपंच पिला माने सरपंच बाबू से कौन करिवे ना ग्राम सरपंच बाबू ही पारंती बा सरपंच बतन मैडम ही पारंती से ग्राम सभा मीटिंग डकेबे एवं पिला माने ग्राम सभा काकु निगठित हबो द ग्राम सभा विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत एरिया पिला माने ग्राम पंचायत एरिया से गोटे गां ही पारे बा विभिन्न गां ही पारे सेटे जो मान सब रजिस्टर्ड वोटर थिबे से माने आसिकरी ग्राम सभा मीटिंग रे जोग देबे एंड ग्राम सभा मीटिंग is called the village parliamentary meeting पिला माने जिन पार्लियामेंट मीटिंग बसछि देशर शासन चलिया पई देशर भलो मद बुझिया पई पिला माने ग्राम सभा हो ठीक सेमति गोटे मीटिंग जो मीटिंग रे गां लोक माने बसिबे गां रा समस्या बजट पास करिबा गां रा जो हमर सब रिकमेंडेशन आछि पॉलिसी सभा मीटिंग ता रिकमेंडेशन को तमन देखिबे एवं गोटे वर्ष पई से माने योजना तयारी करिवे एक्शन प्लान तयारी करिवे कोठी स्कूल हबो कोठी ड्रिंकिंग वाटर हबो कोठी हमर
रोड कंस्ट्रक्शन हबो बा कोठी माछ पोखरी खोला हबो बा कोठी कोन समस्या सब अछि ता ऊपर से माने डेवलपमेंट टैक्सेशन एंड अदर एक्टिविटी ऊपर पिला माने से माने एक्शन प्लान तयारी करी पठेबे कोठी की ना हमरो पंचायत समिति की जो सेटा अप्रूव के आसीबो ता पर सेटा काम करा ओके हम तो सादर समय कम so besides ward member and sarpanch there is another person called naib sarpanch or in another term it is called vice sarpanch is not elected directly he or she is a person elected after the election of the ward members जो ward member हेतिबे से ward member मान मध्यरु जणे व्यक्ति से हेबे हमर vice sarpanch एवं vice sarpanch is a person who assist the sarpanch in the absence of sarpanch vice sarpanch will act as the functionary जब तांको सरपंच बाहर कर दिया गला तांका absence रे ये मध्य काम करि परिबे and as you know sarpanch is the head of our gram panchayat okay so it is the sarpanch who heads the gram panchayat पहला मन कहया गले हमर सरपंच बाबू माने बा सरपंच मैडम माने सेमन पर होजन मिनी प्राइम मिनिस्टर मिनी चीफ मिनिस्टर कारण गाँर विकास गाँर शासन पिला माने तांकरी दक्षता तांक नेतृत्व उपरे पिला माने निर्भर करि थाए सुतरां unless until the सरपंच will be effective the village development will not be effective तो पिला माने सरपंच बाबू वर्तमान होचंती हमर जने मिनी प्राइम मिनिस्टर बा मिनी चीफ मिनिस्टर तांक नेतृत्व रे हमर काम चले एवं से ग्राम पंचायत मीटिंग डाकंती ग्राम सभा मीटिंग डाकंती and all the issues they are also been addressed by sarpanch and sarpanch is assisted by a person called your आगुर कहतला सेक्रेटरी वर्तमान को हाउची विलेज your village level फंक्शनरी जे कि पिला माने सरकारंकर एक नियुक्ति प्राप्त लोक से जने हेले सरकारी कर्मचारी एवं से सरपंच बाबू को विभिन्न कार्य पिला माने सहायता करंती एवं सरपंच बाबू विभिन्न सुपरवाइज काम करंती सरपंच बाबू विभिन्न पंचायत लॉ को कार्यकारी करंती मीटिंग डाकंती एवं गाँर जहा जहा पिला माने दरकार ताकू से काम गुड से कर ओके एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन 1/3 of the seats has been reserved after the 7th amendment in Odisha we have 50% reservation for the women okay तेणु एटा मध्ये रोटेशन हबो यदि ये वर्ष सरपंच बाबू जने मेल हेचंती आर वर्ष फीमेल हेबे यदि सरपंच बाबू फीमेल हेतिबे देन वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट वाइस सरपंच पोस्ट विल बी कम टू ए मेल पर्सन तो पुरुष महिला भितर पिला माने अदल बदल हेकरी चलिबो एवं वार्ड मेंबर माने ता भितर 50% पिला माने हमरो महिला माने हेबे okay now the second part of this that function is called gram panchayat we have two types of function one is called compulsory and second called obligatory so पिला माने गोटी होउची हमर इच्छा दिन गोटी होउची बाध्यतामूलक one is called compulsory जोटा हमर करिया पे बाध्य and for that purpose gram panchayat act article 243g to 243h पंचायत माने की क्षमता पाइबे 29 आइटम ऊपर पिला माने हमर पावर दिया हैची ग्राम पंचायत को विशेष करी those having local importance like construction and maintenance of village road supplying of drinking water maintenance of public well tank lightening of village street then construction maintenance of lavatories drains then spread of primary education adult education then maintenance of public property and panchayat property regulation of local hato and market so registration of birth and death पिला माने एमती अनेक गुडी 29 आइटम ऊपर दिया है पावर ता ऊपर से माने विभिन्न कार्य करि परिबे then we have some optional function optional means ताका पाखरे टंका थिले ताकू से माने खर्च करिवे like tree plantation maintenance of village forestry then soil conservation marketing of agriculture product promotion of cooperatives organization of village industries बा cottage industry एमती पिला माने अनेक काम से करि परिबे ताम पाखरे पैसा थिबो okay so this is all about our gram panchayat in a brief now let us know about panchayat samiti as I mentioned earlier panchayat samiti
at the middle tier. ये आम पंचायत संस्था गोटे मध्यम स्तर संस्था जोटा कि ब्लॉक लेवल अच्छी and in Odisha we have now 314 panchayat samitis, and panchayat samitis is composed of two types of member. One is called official and second called non-officials. Okay, किसी सरकारी बाबू माने रहंती आ किसी इलेक्टेड लोक माने रहंती. Who are the persons? They are called samiti members. Samiti members elected directly from each gram panchayat under the block, and sarpanches of the gram panchayat, then chairman and vice chairman. पिला माने हम जानि छे जे पंचायत समिति रो मुखिया होचंती chairman. Okay, so chairman is elected by the samiti members. Then another vice chairman. Okay, vice chairman assist the chairman. So एमाने पिला माने political लोक एमाने directly vote पाई के आसंती. So एमाने होचंती पंचायत समिति रो political लोक माने. Okay, and those are official जो सरकार लोक से माने किए ना. If the panchayat samiti is a NSC or a block, then पिला माने से NSC रो जो chairman हेतिबे. यदि municipality हेतिबे से municipality रो chairman, local MLA, local MP. If the member of Rajya Sabha तांकर से घर तांकर से अंचल रहिता है से member मध्ये ही परिबे. Besides पिला माने आउ को माने official member माने ना सरकारी member माने आउ को माने ही परिबे ना block development officer, BDO, block extension officer हमर सब थांती संप्रसारण अधिकारी माने. नोबला माने पंचायत समिति रे मध्ये the post has been reserved, okay, for SC, ST, OBC, and 50% seats has been reserved for the women. As I already mentioned, it is the chairman who is the head of the panchayat samiti, and he or she is assisted by the vice chairman. The tenure is for 5 years, and BDO is the executive officer of the panchayat samiti. So BDO कौन करंती ना से ग्राम पंचायत रो काम को से डेली काम को से देखा देखी करंती. बीडीओ नेतृत्व रे पिला माने पंचायत समिति डायरेक्टली काम करता है, एंड बीडीओ इज यूजुअली ए ओएस ऑफिसर, ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर ऑफिसर ओडिशा रे. एंड आल्सो द नंबर ऑफ पंचायत समिति ओडिशा में कहली 314, हम पिला माने सब पंचायत समिति रो आसन संख्या समान नुही. It consists of 30 wards, 25 gram panchayats, 32 panchayats. Okay, तार किछि निर्दिष्ट भाव रे मेंशन करा जाय नाही. So it depend upon the government ताको से माने निर्धारण करिवे. नॉर्मली जोटा हमरो मैनेज करी होतबो 35 25. Okay, ता भीतर रहिले हमरो भलो. Okay, so what is about the functions of chairman? Chairman is the head of the panchayat samiti. He convenes the meeting, and also he is the person who act as the head of the panchayat samiti. Under his leadership, the panchayat samiti also works, and he inspects, supervise various functions undertaken by the panchayat samiti, and the chairman has the power to control the officials including the BDO. Okay, so meeting जोटा कहा तक meeting डाकंती एवं पंचायत समिति पिला माने काम से दी प्रकार रो सेही obligatory बा हमरो ऑप्शनल कहि परिबा. मेनली द फंक्शन होउजी जे planning, execution, and supervision of developmental works that has been under implementation at the village level. पिला माने गां स्तर जो सब काम सब चाली छी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, हेल्थ, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कोऑपरेटिव्स पिला माने से काम गुडा को हमर पंचायत समिति को देखा राखी करंती, एवं से काम गुडा का मुख्यतः पंचायत समिति रो मुख्य काम गुडा को. तापर हला मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत केम काम करछन ताक मत देखि परिबे. अप्रूवल ऑफ द पंचायत समिति बजेट, प्रिपरेशन ऑफ द पंचायत समिति बजेट पिला माने पंचायत समिति बजेट तयारी करंती जोडे पठांती जिला परिषद रा अप्रूवल पाई. तापरे supervision and control of panchayat samiti officials. Okay, so these are the main functions of panchayat samiti. पिला माने पंचायत समिति रे मध्ये विभिन्न टैक्स बसेबार क्षमता अछि. से माने स्पेशल टैक्स बसे परिबे, ग्रांटिनेड सरकार रो पाई परिबे, एवं से माने इनकम पांती विभिन्न टैक्स रु, विभिन्न सरचार्ज रु, विभिन्न मार्केट रु, एवं विभिन्न कर बसे कि पिला माने से पैसा आदे करंती हमरो पंचायत समिति माने. Now the last year it is called Jila Parishad. As you know, Jila Parishad is situated at the district level, and it is the highest level body in Odisha. For the first time, Jila Parishad was created in 1961. पुन तक 1968 तक abolition कर दिया गला. पुनी again हमें Jila Parishad body पिला माने until 1991.
এবং 1992 রে it now become part and parcel of our Panchayat Raj governance. And now in Odisha, we have 30 Jila Parishad. And so far the composition of Jila Parishad is concerned, Jila Parishad consists of its members. member माने किए जो माने सबू विभिन्न ब्लॉक रु बछाई के आसंती. Each block sends 2 members to Jila Parishad who are directly elected by the people. Okay? And Jila Parishad पिला माने ब्लॉक भली सरकारी बेसरकारी ये दो प्रकार लोग नहीं गठित होता है. First is called Jila Parishad members. Second है MLA or MP. Third is called chairman of the Panchayat Samiti, chairman of the NSC or municipality. Then the other extension bodies like the collector रहिबे, sub collector रहिबे, our district संप्रसारण अधिकारी, हम कौन the district extension officer. Then who is the head of the Jila Parishad? It is called the president. Our vice president. Okay, and Jila Parishad is basically a supervisory body. Okay, it supervises and the Panchayat Samiti and Gram Panchayat, and it approves the budget of the Panchayat Samiti. It also prepares its own budget, and basically, since it is the higher level body, its primary function is to supervise and manage all the developmental activity inside the district. ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଚାଲିଛି ତାର ଯୋଜନା ବନେଇବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ କାମ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବଜେଟ ପାସ୍ କରିବା, ନିଜର ବଜେଟ ପାସ୍ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯେ ସବୁ ଯୋଜନା ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପଠେଇ ଆପ୍ରୁଭ କରିକି ଆଣିକି ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବେ. ଏବଂ ତାର ଅଲସୋ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଇନକମ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କର ବସାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି ରଖିଥାନ୍ତି. ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି. our Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jila Parishad. Very briefly we have discussed because we have running out of time. Okay, we have already 10:30, another 30 minutes left. We have to cover 2 more chapters. Okay, so this is a very brief discussion. Before we switch up to urban local bodies, very briefly, let me evaluate the working of our Panchayat Raj institutions. पिलाମାନେ ସଂକ୍ଷେପ ଦେଖିବା ଆସ ଏ ସଂସ୍ଥା ମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି. ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 1992 ରେ ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ ହେଇଗଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମାନେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟସର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଥରିଟି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି. ପିଲାମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ these bodies are not working very effectively. Lot of research has been done. From those research reports, we come to know that though there is provision for transfer of power, the assemblies, state assemblies has not transferred the power to the local government. Their source of income is very low. So they have no authority. There is a lot of political interference. The Panchayat institutions or Gram Panchayat institutions are a body which is totally depending upon the Panchayat Samiti and the government for its working. ପିଲାମାନେ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି. ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାମାନେ ଏଠି କରପସନ ହଉଛି. ପିଲାମାନେ ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ସେମାନେ ସଠିକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳୀୟ ମାନେ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଶୁଛି. ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି since 1992. କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ they have the scope, they have the chance if proper power has been transferred, authority has been given and with adequate ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଫିନାନ୍ସ ଦିଆଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚେରକୁ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବେ. ଏଥିରେ ଆମର ଦ୍ୱିମତ ହବାର ନାହିଁ. ବଟ୍ the condition is that they must be given adequate power, adequate authority and adequate finance.
Now we shall come to know about urban local bodies. पिला माने हम जानि जे हमर दुईटी स्तर रे हम लोक मान बसबास करू हम जानिले गोटे ग्रामांचल कथा at the rural level. Now we shall be discussing about urban level. And you know, Gandhiji said earlier, India lives in villages. पिला माने भारतर आत्मा गाँ रे अछि किंतु पिला माने आस्ते आस्ते गाँ लोक माने सहर आड़ को आछुंती. So now there is growing importance of urbanization. Okay, पिला माने आस्ते आस्ते तन कोन होउची ना there is increasing trend towards urbanization. So that's why renewed focus has been given to urban local bodies. पिला माने वर्तमान आमे लास्ट जो हमर थे आस्तला जनगणना रिपोर्ट सेतरे पाखापाखि 28%. Okay, 72% people they are living in villages and 28% people they are living in cities or towns or metropolis. तो हमें कोच urban area. तो पिला माने पाखापाखि 28% लोक त माने more than 30 crore people are living in our cities. So definitely cities have their own problem. City people have their own needs. Like drinking water, storage, development, electricity, road lightening, transportation, healthcare, education. पिला माने सहरांचल पई हमर दरकार पीवा पानी, उपयुक्त गमनागमन व्यवस्था, रास्ता, आलुओ, बिजुली जोगाण, तापरे परिमल, वेरी इंपोर्टेंट परिमल ड्रेनेज. ओके, ड्रेनेज आम जो जिन सब घर बाहर कर छाड़े प्रॉपर स्टोरेज. ओके, तार व्यवस्था मध्य दरकार. सो पिला माने ताहा मध्य सहरांचल एक प्रमुख समस्या. ओके, सो फॉर addressing those problems we have also created this urban local bodies. Okay, पिला माने एबे आमे संक्षेप रे within 30 minutes आमे दुईटी यूनिट को कवर करिबा बट वेरी वाइटल पॉइंट्स मु आपण मानक सम्मुख रे रखि. The history of local government at the urban level is not quite old. पिला माने ग्रामांचल स्वायत्त संस्था बा पंचायत भली हमरो पिला माने यार इतिहासटा एते पुराना नुही. काहे कि ना सहरांचल एक आधुनिक कॉन्सेप्ट. The growth of urban areas, cities, towns, metropolis, okay, it is purely a urban area. It is a very modern idea. Okay, originated in modern times. तो लोक मान सब कृषि रु छाडी के शिल्प आड़ को आसिले तो पिला माने हमर शहरीकरण आरंभ होला एवं सुतरांग भारत वर्ष रे नुवा some pockets किछि अंचल रे during Gupta period, Mughal period, during our Maurya period, some sort of references were there of the urban local government. But systematically, if we analyze the history of our urban local government, dear student, we found that these bodies were created during the British period. Okay, पिलामाने ब्रिटिश शासन काल रे हमर पिलामाने एई urban local body गुडा को पिलामाने आरंभ होइतला and it was the Madras who was the first municipal council of our country. Okay, that was created in the year 1887. Sorry, 1687. 1627 मसिया रे सेमाने प्रथमे माड्रास रे गोटे म्युनिसिपल काउंसिल तयारी करथिले एंड तुम जानि जे पिला माने सेमाने बॉम्बे, कलकत्ता, देन माड्रास ए तीन जे चार जगह प्रथम सेमाने बस स्थापन करथिले तांकर शासन पीठ थिला. सो तांकर पिला माने मत आवश्यक थिला ब्रिटिश मान सेटा से रहउथिले. So address their own problem, they have started the first municipal council at Madras, but systematically in the year 1793 they passed a act called Charter Act. पिला माने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आसन थिला तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करथला. So they passed a act called Charter Act in the year 1793 by which Madras, Bombay and Calcutta, okay, these three municipal councils they have created. Okay, so they have created three municipal councils and later on other municipal councils and corporations they were created. And like our rural bodies, it was Lord Mayo
in the year 1870, Lord Ripon in the year 1882, then Royal Commission of Decentralization 1907, then 1919 Act, 1935 Act. ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ এই ବିଭିନ୍ନ ଆଇନରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ. But as you know, before independence, very less number of people they were residing in cities. ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ. ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦିଓ ଏଟା ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ more and more people shifted to urban areas from the rural areas, ପିଲାମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ultimately after passing of 74th Constitutional Amendment Act, 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର ପାସ୍ କରାଗଲା, ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରାଗଲା 1992 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ କଣ କଲା ନା ଏ ସମସ୍ତ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା. They were recognized as the constitutional bodies. So all the urban local bodies, they were recognized at the by the constitution. And କଣ କଣ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ. ସୋ ପିଲାମାନେ 1992 ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା. ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମର ଆଗରୁ ନଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା 1992 ପରେ. And now we have three types of urban local bodies. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଆମ ସାରା ଦେଶରେ ତିନି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାନ ଅଛନ୍ତି. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ଯାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପପୁଲାରଲି କର୍ପୋରେସନ, ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ମହାନଗର ନିଗମ, which is the bigger one found in bigger cities. The second is called municipal council, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ municipality. And third is called NAC, notified area council. Notified area council, these are found in small towns, small cities. In some states the NSC is called nagar panchayat. Okay, so ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜାଣିବା ଏ ସଂସ୍ଥା ମାନେ କେମିତି ଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କଣ. ପିଲାମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକର who are the functionaries, ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ, କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଫଲି ଜାଣିବା. Dear student, as I mentioned, it is the 74th Constitutional Amendment Act who for the first time constitutionalized the urban local bodies and given them power, authority and terms and conditions of their working. ପିଲାମାନେ 74th Constitutional Amendment Act ସାହାଯ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ କାମ କରିବେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସେଠି କେମିତି ନିଜର ଦୁଃଖ ବା ନିଜର ସମସ୍ୟା ସେଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା. And what are the major features of this Constitutional Amendment Act? ପିଲାମାନେ by this Constitutional Amendment Act 12th schedule 12ତମ ସୂଚୀ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରାଗଲା. ଆମେ 11 schedule ଆଣିଥିଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆଣିଲେ 12 schedule. And article 243 P to Z, okay, ତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ତାର ସଂସ୍ଥା ଗଠନ ପାଇଁ ଓ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ. What are the basic features? It created three types of urban local bodies. For the bigger towns, for the metropolis, we have corporation. For the medium towns, we have municipality. And for the small towns, either we have your nagar panchayat
or NSC. So uniform pattern सारा देश रे सब राज्य मानक रे हमर एमती गोटे यूनिफॉर्म पैटर्न करा गला. Number 2 definite term 5-year term. Number 3 reservation of seats. Okay, SC ST OBC को ପାଇଁ पिला माने स्थान संरक्षण करा गला. And for the women 1/3 seats, and Odisha we have also reserved 50% seats for the women. Besides that, provisions were made regular election 5 वर्ष भितरे आम इलेक्शन करैबा एवं को पदाधिकारी माने केमिति बछाई के आसीबे पिला माने तार मध्य व्यवस्था हमर करा गला पिला माने ए जो 74th constitutional amendment act. Now very briefly पिला माने वर्तमान आमे आलोचना करिबा ए तीन प्रकार स्थानीय स्वायत्त संस्था विषय. First, let us discuss about municipal corporation, which we called corporation. Odisha ame popularly called the corporation, and in Odisha we have now 4 corporations like BMC, Bhubaneswar Municipal Corporation, Kotak Municipal Corporation, then Berhampur Municipal Corporation, then Sambalpur Municipal Corporation, and also another corporation has been created that is called Radhakanta Municipal Corporation. Radhakanta, Sambalpur, Berhampur, Kotak and Bhubaneswar. ए पांचटी जगह रे वर्तमान हमरो पिला माने करा जायछि corporation, urban local body. Okay, so from the all India level, corporations are created in the metropolitan cities. Okay, पिला माने जो शहर मानकर लोक संख्या अधिक पिला माने सेही शहर मानकर आमे urban local body हिसाब रे ताकू आमे करि परिबा. Okay, whereas population is more than 5 lakhs. Okay, सेटा आमे एटा को करि परिबा. And also in India we have more than 70 municipal corporations. Okay, like Bombay, Delhi, Kolkata, Amritsar, Hyderabad, Chandigarh, Bangalore. So in Odisha, already I mentioned, we have now 5 rather, not 3, 5 municipal corporations. They are working at the bigger or metropolitan cities. Okay, so now let us know its composition. Dear student, so for the composition it is concerned, the municipal area is divided into number of wards, and from each ward a person is elected called councillor, and in Odisha we call it corporator. Okay, corporation members man heito tang na is corporator, and in Odisha seats have been reserved for the SST, OBC and for women. Already I have told you. Ebong rotation पिला माने formula apply हुए जे थरे गोटे male हेतले आर female हे जिवो ए सी हेतले ST हबो. And who is the head of the corporation? It is called mayor. Mayor is the head of the corporation, and mayor is assisted by a deputy mayor. Both mayor and deputy mayor are elected by the corporator or councillor for a period of 5 years. And mayor is a person who heads the corporation, and under his leadership or under her leadership the municipal corporation works, and he provides leadership, and he or she took the lead role in the working of your corporation. And the corporation having a full-time person, full-time administrative person, and the person is called commissioner. Okay, पिलाମାନେ ପ୍ରତିଟି corporation न जणे थांती मुखिया जे कि सरकारଙ୍କର जणे बड़ लेवल अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, and that person is normally a IS people. Okay, तो कहा जाए म्युनिसिपल कमिशनर. ओके, से कमिशनर पिला माने अपॉइंटमेंट होंती सरकारଙ୍କ द्वारा, एंड से पिला माने मेयर को सहाय्य करंती तांकर डे टू डे वर्किंग रे, एवं मेयर एवं तमरो जो मान रहिले हमरो कमिशनर ये दुई जण मिसकरी कॉर्पोरेशन काम को आगे नियमती. एंड as you know, besides mayor, your commissioner and deputy mayor and corporator, they have different councils. पिला माने एटा गोटे बहुत बड़ एरिया. ओके, तेणु सब कथा गुडाक हमरो मीटिंग रे होय त कथा न आसी पारे, सेति पय सब विभिन्न कॉर्पोरेशन एरिया को विभिन्न बंटा जाइछि एवं विभिन्न कमिटी कर दिया आइछि. कमिटी सब विभिन्न मेंबर माने अछंती, से मेंबर माने सब विभिन्न कमिटीर सभ्य हेबे एवं से माने मुख्यतः
स्थानीय स्तर रे होतिबा समस्या गुडी को ताकू एड्रेस करिवे ओके what are the functions the two types of function one is called compulsory and the second called optional function so for the compulsory function is concerned they are called obligatory to kare semane badhya and what are the they are the supply of water supply of electricity construction maintenance of public roads streets lightening of roads then arrangement of road transport then your storage then prevention of epidemics registration of birth and death provision for primary education then removal of obstructions in the project areas provision of fire bridge and market places okay tamane स्थानीय अर्बन लोक मानकर जो सब स्थानीय समस्या अछि स्थानीय नीड्स अछि पेमन ताकू एड्रेस करिबा होची हमरो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नो मुख्य मुख्य काम then they have some optional function like construction and maintenance of public parks gardens plantation of tree provision for rest sheds guest houses relief and rehabilitation operation then organization and management of fair and exhibition then establishment of recreation center कल्याण मंडप तैयारी करिबा क्लब तैयारी करिबा सो ता पारे पैसा थिबो ताकू से माने करि परिबे so they have also sources of income they have the power to levy taxes such as water taxes sanitary taxes property taxes theater taxes entertainment taxes vehicle taxes advertisement taxes number of holding taxes they also got some help from the government okay se mane madhyam government ru kichi granting aid paithanti municipal corporation no proper working kariya pai okay now let us move to the second type it is called municipality or municipal council municipal council is another popular type of urban local civil government it is found in the medium towns population having within 3 lakhs at present in Odisha we have 37 municipalities okay like the corporation the municipality having the one composition each municipality has a municipal council and it consists of councillors council means ward members the councillors they are elected from different wards okay in Odisha the number of wards varies from 11 to 60 and seats has been reserved for SC/ST and OBC people and for the women also and the municipality is headed by a person called chairman and he is also assisted by a person called vice chairman both the chairman and vice chairman they are elected by the ward members or to whom we call a councillor and the chairman is the head and the chairman and vice chairman is the seats are reserved for women rotation wise if the president if the chairman will be male then vice chairman will be female or vice versa then rotation SC/ST OBC also that is there and the term of municipality is for 5 years so chairman you also remain office for 5 years and chairman heads the municipal corporation and municipality have a executive officer जेमति पिला माने हमर कमिशनर अछंती काउंसिल हमर कॉर्पोरेशन रो सेमति म्युनिसिपलिटी रो डे टू डे वर्क बुझिया पई सरकार जणे प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करचंदी एंड ही इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंको जाय ओडिया रे कार्यनिर्वाही अधिकारी एंड इन ओडिशा he or she is a person belongs to Odisha Administrative Service or OS so पिला माने जहा जहा म्युनिसिपलिटी रो डेली वर्क सब हुए ताकु से देखंती सुपरवाइज करंती प्लान तैयारी करंती प्रोग्राम तैयारी करंती एवं चेयरमैन को सहित मिसिकरी से म्युनिसिपलिटी रो विभिन्न कार्य सब ताकु संपादन करिथांती what are the basic functions basic function of municipality is of two types one is called compulsory second called optional and compulsory like the corporation functions like construction and maintenance of road supply of drinking water lighting of street and public places maintaining sanitary system cleaning streets and improving roads healthcare and control of epidemics regulation of transport and communication spreading primary education maintenance of birth and death records providing relief to people at the time of their need then control of HATO
and markets. So for the optional function concern, maintenance or construction of parks, playgrounds, gardens, arrangement and control of fairs, festivals, plantation of trees, establishment of libraries, recreation center, kalyan mandaps, and provision for the welfare of the people. Okay, they are having their own source of income like living taxes, water taxes, lighting taxes, holding taxes, and government also helps the municipalities through granting aid. सरकार मध्य पिलामानंकु सहायता करथाय. So let us discuss the last one. The last one is called NSC, which is called Notified Area Council. In Odia, we called it Bigyapita Anchola Parisada. Okay, Notified Area Council is the lowest among the urban local self bodies. It is found in the small but growing towns within the range of 10,000 to 30,000 population. 10,000 ରୁ 30,000 लोक संख्या थिबा एक छोट सहरांचल पाई पिला माने आमे एनएससी संस्था टी गढी परिबा एवं पिला माने जो गारु सहर आडू जाउ थाए सेही जोडा गारु छ छ टाउन आडू जाउ से टाउन गुडा को अंतर्भुक्त करिथांती हमरो एनएससी हिसाब रे स्मॉल टाउन लाइक चांदबाली, पट्टामुंडाई, सोरो, ओके, कताबिरा, सो मेनी स्मॉल गोपालपुर स्मॉल टाउन गुडा को पिला माने हमें तो कन्वर्ट कर दियंती एनएससी हिसाब रे एवं अर्बन लोकल गवर्नमेंट हिसाब रे. And so far as composition concerned, this municipality is NSC divided into number of wards, and each ward elects its own councillor called ward member or councillor, and the head of the municipality, the head of the NSC is called chairman. Chairman is assisted by vice chairman. Both chairman and vice chairman, they are elected by the councillor, and the head of the NSC, as I told you, the chairman being the head, the chairman convenes the meeting, presides over the meeting, and he or she is responsible for implementation of various developmental activities, developmental plans, programs, welfare activities inside the NSC areas. The term NSC is for 5 years. So the chairman is assisted by a person called executive officer. पिलामान जेमते हम देखिले म्युनिसिपालिटी जण थांती सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी सरकारंकर, एटी पिलामान मते थांती सेम जण अधिकारी जण साधारणतः ओएस पाहियार लोक जे कि एनएससी रो डे टू डे वर्क पिलामाने परिचालना करंती एवं द बेसिक फंक्शन ऑफ एनएससी like the corporation and municipality, like obligatory and like your optional, like maintenance and construction of NSC roads, then lightening, storage, sanitation, cleaning of roads, healthcare, control of epidemic, regulation of transport communication, then spread of primary education, registration of birth and death, then provision of relief and rescue operation, control of heart and market. Then the optional functions like provision for gardens, parks, then recreation centers, libraries, then old age homes, and provision for your construction of welfare houses, okay, for the needy people. So these are the main functions of NSC. So let us conclude by having an estimation. पिलामाने सहरांचल जो तीनोटी संस्था माने रहिले कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी एंड एनएससी ए मानकर गोटे छोटिया आमे आकलन करिबा जा सहित आमे पाठ पढा को सारिबा. Dear student, so far the working of these local bodies are concerned, their working is not satisfactory. The same problem that the rural local government, I mean panchayat bodies are facing, the same problem is being faced by these bodies. पिला माने हमरो सहरांचल स्थानीय संस्था माने ए माने संवैधानिक संस्था हिसाब रे ऑटोनोमस बॉडी हिसाब रे काम करि पारु नांती, because there is lack of power. Power has not been still not transferred to the local bodies. Number 2, there is lack of authority. Number 3, there is lack of finance.
Number 4, there is political interference. Number 5, there is your government interference, administrative interference. Okay, so tussle is going on at different levels. Okay, so due to lack of funds, power, facilities, political interference. Okay, and one more thing we may add, that lack of awareness. लोक माने तांको पाखरे सचेतनता आज भी अभाव रही से माने ठीक भाव आसुनांती निजर ग्रीवांस जणौ नांती जोति पई लोकल बॉडी माने अर्बन एवं रूरल स्तर रे सटीक भाव रे काम करि पारु नांती. बट बिफोर आई कंक्लूड, आई मे अगेन कोट Lord Bryce that these local bodies, both rural and urban, they are quite potential bodies to strengthen our democratic governance. They are the bodies to whom we may termed as the school of democracy. They are the training ground. So if they perform their works properly, lot of burden will be reduced at the central level and state level. But unfortunately, that is not the case. Still, center and the state government, they are not transferring the power, not transferring the authority, not transferring the finance to the local levels, so that they are working as a formal body. पिलामान सेमान केवल विधिवत भाव काम करूचंती एवं अनुष्ठान भाव काम करूचंती, किंतु जेमिति सेमाने इफेक्टिवली काम करिया कथा सेमाने करि पारु नाहंती, किंतु एमानकर क्षमता अछि, एमाने करि परिबे, गणतंत्र को उच्च स्तर को नै परिबे एवं लोक मानकु क्षमता रे शामिल करि परिबे एवं आम भारत वर्ष रे गणतंत्र चेर को पिला माने खूब मजबूत करि परिबे. So this is all about your block 4 and all about decentralization, democratic decentralization in India. If you have any question, then you may send to me. So now it is Bijaya sir to moderate the discussion. Thank you, sir. Bijaya sir. Thank you, sir. Very nicely you have explained all the decentralization process in rural area and urban area also. Now we'll take some questions, sir, because we have lack of time. We will only take the important question. Okay, sir. The first one is whether panchayat decisions are valid in court or not. Sir, please mute your mic so that audio will be clear. Yes, sir. The question is whether panchayat decisions are valid in court or not. Court or not. Panchayat ro jo decision guda hochi seta court re valid ki nuho. Sir, please unmute. Please unmute your mic, sir. Please unmute your mic, sir. Jayanta sir, please unmute your mic. I'm not able to listen your voice because my audio is very poor and I'm not. It is not audible to Yes, me. sir. Please repeat the question again. Yes, sir. पिला माने पचारिचंती whether पंचायत decision are valid in court or not. कोर्ट रे जो पंचायत हमरो decision दोचे Yes. valid कि नो. Yes. It is quite valid. Since it is not part and parcel of our discussion, that already the provision for gram न्यायालय हमर गाँर शासन आम तो दीटा अंग पाइगले, गोटे पाइले ग्राम सभा पल्ली सभा एवं गोटे पाइगले एग्जीक्यूटिव बॉडी हमर सरपंच बाबू, किंतु गाँर न्याय किए दबा हमको हमर जो थला गाँ कचेरी. फॉर दैट पर्पस हमर सरकार कोन करछुंदी ना ग्रामीण न्यायालय विलेज जुडिशियरी सब करछुंदी. And all the decisions of the judiciary, as all the decisions of the Gram Panchayat, they are very much valid. They can be challenged at judiciary because the power and function, what sort of activity that has been discharged by the sarpanch, by the vice sarpanch, or chairman, or the president Jila Parishad, they can be challenged at the court of law. तांको पिला माने challenge करा जाई पारिबो कि इंद्रावास पाउनी, कोर्ट रोड होउनी, बा मैं जो कथा उठेइचे प्रसंग देइचे हमर ग्रीवेंस देइचे ताको एड्रेस करा जाउनी, it can be challenged at the court itself, so that they are open to judicial scrutiny. Yes, sir. Sir, in the year 2010 also, the Supreme Court also says that the decisions which are given by the panchayat are also not valid. They can be challenged. Sir. Okay, the next question is Grama Sabha a permanent body? We have already discussed about it. ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସଭା ଏକ permanent body କି? Yes. ଗ୍ରାମ ସଭା ଯେ permanent body and it is called village legislature. एटा village parliament भଳି हम काम करूची एवं वर्षक मीटिंग ना दिथर बसची, थर फेब्रुआरी थर जून ने
ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସୋ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ତା ଗୋଟେ ଛାଡିଗଲି କହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମନେ ପଡିଲା ଆଉଥରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଯେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସିବେ ନିଜର ଶାସନ ନିଜେ କରିବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन इन इंडिया ये क्वेश्चन पड़ला परीक्षा जी क्वेश्चन पड़ला को स्तर रे बा को संस्था भारत वर्षर डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रचलन बा प्रचलित होउछि ता होउछि हमर ग्राम सभा पुलिस सभा मध्ये होई परिबो बट द राइट आंसर इज ग्राम सभा इट इज ए परमानेंट बॉडी एंड इट मीट्स ट्वाइस इन ए ईयर लोक माने गां लोक माने बसिबे जो माने सब होउछन्ती 18 वर्ष रु ऊर्ध्व जो माने वोट दैछन्ती से माने बसिकरी गां शासन करिवे एवं प्रत्यक्ष भाव में गां शासन रे गणतंत्र भाग नहीं पाए Yes, sir. Those who have completed 18 years of age, they can directly participate in Gram Sabha. So it is a permanent body. Yes, sir. The next question is, what are the source of funds for Gram Panchayat? Source of income in Gram Panchayat? Okay, there are lot of sources. सरकार हमको तो बहुत कथा कहिसंती हमर आईन ने बहुत कथा अछि किंतु वास्तविक हमको से काम करिया पे बा टंका आदे करिया पे स्कोप नाही हमर ग्राम पंचायत बहुत गुडे कर बसई परिबे जेमते आमे सब आमे छा छा सब होइतलु गां पंचायत सब साइकिल सब आनी सब गोटे गोटे टोकन दियंती 2 टका लखा दे करंती मोटरसाइकिल जानी टोकन दियंती सो देयर सोर्सेस इज दैट दे कैन levied taxes tax non tax से माने हाउस टैक्स बसई परिबे टैक्स ऑन एनिमल नहीं परिबे टैक्स ऑन व्हीकल नहीं परिबे प्रोफेशनल टैक्स बसई परिबे पंचायत आल्सो गॉट इनकम फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्सेस लाइक मार्केट जोटा जदि हाट अछि साप्ताहिक हाट अछि कैटल पॉन्ड अछि टैंक अछि वेस्टलैंड अछि ओके एमते अनेक सोर्स नहीं परिबे किंतु वास्तविक ताको हमर कार्यकारी करा जाउ नाही सेति पई गाम पंचायत गुडा को सुखी की पड़ी चंती तांग पाखरे आर्थिक घोर तांकर आर्थिक अभाव रहउछि Okay, sir. The last question is, it is basically a general knowledge question. How many minimum and maximum members are there in Gram Panchayat? It is, I think, 7 to 17. 7 through 17. How many minimum and maximum members are there in Gram Panchayat? No, it varies. It varies from state to state. Yes, sir. Yeah, very according to the ward number of wards and the population wards, of the in Odisha it is 11 to 25. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So we may conclude that for grassroots democracy, for strengthening of democracy, decentralization is required. But due to lack of proper financial system, interference of local political parties, and awareness, it is not become so fruitful. If it is so, then the democratic will be so strengthened. Thank you, sir. Thank you for your participation and Okay, thank you, Bijay sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, dear students, and also our technical sir, Suna sir, for his tireless effort assisting us technically. Without his technical support, this class could not have been possible. So thank you all. We shall meet again if your university assigns me this type of educational assignment. Definitely, sir. Thank you all. Definitely, sir. Yes. Thank you, sir.